by B4 News, Caru News, B4 Stream, Malnadu TV India, News Gaon se, Samvad Sarocar News, Bharat Post News, Gyan and Organ Donation India Foundation. Our endeavor is to enlighten you with the current topic. And today's topic is not only current but very, very relevant. And the topic is benefits of marriage counseling. Marriage counseling or marriage therapy attempts to improve romantic relationships and resolve interpersonal conflicts. Marriage counseling originated in Germany in 1920s as part of the eugenics movement. The first institute for marriage counseling in the United States began in the 1930s, partly in response to Germany's medically directed racial purification marriage counseling centers. It was promoted by prominent American eugenicists such as Paul Popenius, who directed the American Institute of Family Relations until 1976, and Robert Lochu Dickinson, and by birth control advocates such as Abraham and Hannah Stone, who wrote a marriage manual in 1935 and were involved with Planned Parenthood. Other founders in the United States include Lena Levny and Margaret Sanger. It was not until the 1950s that therapists began treating psychological problems in the context of the family. Relationship counseling as a discrete professional services is thus a very recent phenomenon. Until the late 20th century, the work of relationship counseling was informally fulfilled by close friends, family members, or local religious leaders. Psychiatrists, psychologists, counselors, and social workers have historically dealt primarily and individual psychological problems in a medical and psychoanalytical framework. In many less technologically advanced cultures around the world today, the institution of family, the village, or group elders fulfill the work of relationship counseling. Today, marriage mentoring mirrors those cultures. With increasing modernization or westernization in many parts of the world and the continuous shift towards isolated nuclear families, the trend is towards trained and accredited relationship counselors or couple therapists. Sometimes volunteers are trained by either the government or social service institutions to help those who are in need of family or marital counseling. Many communities and government departments have their own team of trained volunteer and professional relationship counselors. Similar services are operated by many universities and colleges, sometimes staffed by volunteers from among the students' peer group. Some large companies maintain a full-time professional counseling staff to facilitate smoother interactions between corporate employees to minimize the negative effect that personal difficulties might have on work performance. Increasingly, there is a trend toward professional certification and government registration of these services. This is in part due to presence of duty of care issue and the consequences of the counselor or therapist services being provided in a fiduciary relationship. Now, to discuss this very, very important topic about the benefits of marriage counseling, we have very elite, knowledgeable two experts on our panel today. And I would like to invite my first panelist guest, and he is Dr. Rajiv Anand. Dr. Rajiv Anand is the senior psychiatrist and marriage counselor. Dr. Rajiv Anand passed his MBBS in 1976 and did MD in psychiatry in 1980 from King's George Medical College, Lucknow. He opted to serve his country when it was very common to settle abroad for brighter future. He has been serving society with his base in Mumbai. He has clients all over India as well as in many other countries. He was honored with Lifetime Achievement Award by AMA. He has conducted more than 3,000 workshops for different groups and companies with audience size of 10 to 800. His television program on various channels have been widely appreciated for his forthright and practical approach. He is leading in the field of mental and emotional well-being for 41 years. He was president of IMA for 2 times.
He was interviewed in several talk shows in domestically and internationally. Welcome, Dr. Rajiv Anand, on our show. Yes, Dr. Rajiv Anand, today's topic is benefits of marriage counseling. You being a senior marriage counselor yourself, and your practice is for more than 41 years. And you might have come across many cases where the marriage counseling has given lots of benefits to the families or to the couple. Many times it also could not work, but we would like to discuss and hear from you first. What are the benefits of marriage counseling? Benefits of marriage counseling, Dr. Rajiv Anand, please. Thank you, Mr. Lal. And let's say good morning to all the viewers, wherever they are, in whichever part of the country they are or abroad. And I put on record my great appreciation for Mr. Lal's untiring efforts for more than 2 years. Every day, a new topic of webinar. It may sound very simple कि अरेंज करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसके लिए कितनी लॉजिस्टिक मेहनत करनी पड़ती है, वो शायद आम व्यूअर को नहीं पता होगा. So hats off to Mr. Lal for your zeal, for your energy to go on. And we are fortunate that we are able to share our views on particular topic which is close to us and passionate topic to us with the people across. I also welcome my fellow panelists, Ms. Rashi Lashkari, whom I learned has been doing well in her field for more than 10 years. And we represent two different generations, I in my late 60s and she in her early 30s. So we represent two different kind of psychology, two different kind of approach, different perspective of current society, which in many ways is not contradictory, but is complementary to each other. So I enjoy being at the other end and taking her views into the right perspective from her generation. Ironically, that marriage, even though the most important aspect of human life, each one of us, if you recall from the childhood, have been sold this dream by our respective parents and the cousins and the uncles and auntie and neighbors. बड़े हो जाओगे तो शादी होगी, लड़की हो बड़ी होगी शादी होगी, बारात निकलेगी, बारात आएगी, दूल्हा आएगा, ये होगा वो होगा. A lot of our dreams and emotions and aspirations have centered around the practice of marriage, the institution of marriage, the relationship of marriage. We have grown up in the same society as anyone else, so we know that what exactly happened in the society, that marriage is very big nucleus, very big center of social, emotional, financial, and so many other dimensions. So many parents begin saving money. बच्चों की शादी करनी है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, इतने बच्चों की शादी करनी है, इतना खर्चा हुआ. So marriage occupies so much of time, energy, emotion, and effort for 20, 30 years in advance. But interestingly and rather pathetically, the emotional aspect of it or the healthier aspect of marriage is hardly discussed. I often think of simplifying things for my viewers, for my clients across the table whenever I'm in individual session. कई बार बातों को सिंपल अंदाज में कहा जाए तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ सकता है बजाय किसी कॉम्प्लेक्स काम के. कोई भी अगर इंसान एक मर्सिडीज कार या BMW कार खरीदने के लायक है और उसके पास पैसे हैं और वो शोरूम में जाके एक्स अमाउंट ऑफ मनी लाखों रुपए देकर मर्सिडीज कार, BMW कार, ऑडी कार लेके निकल सकता है. उसके पास में रुपए हैं, शोरूम वाले बेच देंगे और फिर उसको बताया जाए तुम गाड़ी में बैठो और यहाँ से ड्राइव करके पूरा चले जाओ, पहुंच जाओगे. अगर उसने पहले कभी कोई गाड़ी का उसे आइडिया नहीं है कि कहाँ गियर, कहाँ क्लच, कहाँ ब्रेक, कहाँ क्या होता है, वो गाड़ी में बैठ के इस गुमान में, इस गलतफहमी में लेके चला जाए जो उसके घर वालों ने बता रखा है, बैठो गाड़ी, नाउ यू कैन अफोर्ड टू बाय अ कार, स्टार्ट द कार, ड्राइव द कार, यू वुड रीच योर डेस्टिनेशन. पक्का है कि वो डेस्टिनेशन तो नहीं पहुंचेगा, रास्ते में जरूर एक्सीडेंट्स होंगे और उस हाईवे पर बहुत सारी कारों के एक्सीडेंट्स मिलेंगे. तो हमारी सोसाइटी में एक लॉपसाइडेड कंसेप्ट रहा है कि जब हम शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं, हम एक फिजिकल लेवल में मैच्योर हो जाते हैं, तो हमसे सोसाइटी हमें उम्मीद करती है अब हम मैरिज के लायक हो गए, अब हमको घोड़े पर बिठा दिया जाए, बैंड बाजा अरेंज कर दिया जाए, लड़की ढूंढ दी जाए, लड़की को बताता है लड़का ढूंढ दिया जाए. और सोशल डायमेंशन पर हम समझते हैं कि हमने वो सब कुछ कर दिया
जो हमारा दायित्व था, जो हमारी ड्यूटी थी कि हमने पैसे इकट्ठे करके शादी के इंतजाम कर दिया, गेस्ट लिस्ट बना दी, कार्ड्स भेज दिए, हमने लड़की ढूंढ ली, हमने शादी की व्यवस्थाएं कर दी और हमने सब बारात का इंतजाम करके शादी का सारा समारोह जो था, एक हिंदी का शब्द है उत्तर भारत का, समारोह जो था वो संतोषजनक रूप से संपन्न कर दिया। बस हमारी ड्यूटी खत्म। मगर वो सोशल डायमेंशन है। उसके बाद ये कोई हिंदी पिक्चर की तरह नहीं है कि आपने एंड में आके दी एंड कर दिया और वहां दिखा दिया कि सब उसके बाद खुश हो गए, तो पिक्चर हीरो हीरोइन खुश हो गए कि उन दोनों एक दूसरे से मिल गए। क्योंकि शादी की सारी इंट्री केसेस, शादी के संबंध की सारी प्रॉब्लम तो उसके बाद शुरू होती है। तब तक तो खाली सपने ही थे, और वो सपनों की रात या सपनों की लंबी लंबी श्रृंखला जो है वो कुछ हफ्ते चलती है, कुछ महीने शायद चल जाती है, कुछ केसेस में शायद थोड़ा और लंबी चल जाती है। क्योंकि उन सपनों से बाहर निकलकर यथार्थ में, रियलिटी में आना कि शादी वो सिर्फ सपना नहीं है जो बताया गया था, जो दिखाया गया था। शादी एक रेस्पॉन्सिबल, कॉम्प्लेक्स, सेंसिटिव रिलेशनशिप है जिसके बारे में हमें सीखना होगा। मैं फिर से एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को कई बार कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उनको मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन देना पसंद करता हूँ। और जो भी लोग के, क्योंकि काफी लोग हैं जो समझते हैं कि काउंसलिंग आसान है, मैरिज काउंसलिंग आसान है। काफी लोग हैं जो समझते हैं कि भाई हमको खाली सांत्वना देनी है कि घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, प्यार से बात हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से लंदन जाना है और 1 साल लंदन में रहना है, तो क्या आप सिर्फ टिकट लेकर और सिर्फ वीसा निकलवा के और सिर्फ 100 पाउंड लेकर, जो इक्विवेलेंट करीबन 9,000 रुपए के होगा, क्या आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे? क्या आप लंदन पहुंच जाएंगे? और लंदन एयरपोर्ट निकलने के बाद आपके हाथ में टिकट होगा, वीसा होगा, 100 पाउंड होंगे, 9,000 रुपए होंगे। उसके बाद आप एक हफ्ता भी नहीं जी सकेंगे लंदन में। भले ही आपके पास वैलिड वीसा है, वैलिड पासपोर्ट है, लेकिन उसके बाद आप सड़क पे भिखारी बन जाएंगे। तो हमारे समाज में मैरिज जो है वो सिर्फ फिजिकल मेच्योरिटी पे कर दी जाती है, विद नो इमोशनल मेच्योरिटी, with no knowledge, with no awareness about what else would be required once we'll end up in London. हम लंदन पहुंचने के बाद हमें लंदन की ज्योग्राफी पता हो, कितने स्टेशन है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, कहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, कहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट है, कौन कौन सा ट्रेन का सिस्टम है, कितनी लाइन सिस्टम, हमें कुछ नहीं पता। हम यहाँ से वीसा निकलवा के और टिकट लेकर, पासपोर्ट लेकर लंदन पहुंच गए। ऐसे बहुत सारे लोग मैरिज में बैंड बाजा बारात हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, हनीमून हो गया, मैरिज हो गई। प्रॉब्लम शुरू होती है उसके बाद। और उसके बाद के बारे में अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 10 में से 9 लोगों को उस विषय पर समुचित जानकारी होना तो बहुत दूर की बात है, बहुत कम जानकारी होती है। या जो लोग जिसे जानकारी समझते हैं, वो शायद शरीर के बारे में होती है, शरीर के अंगों के बारे में होती है, रिश्तों के बारे में नहीं होती, भावनाओं के बारे में नहीं होती, एक दूसरे के व्यक्तित्व को समझने के बारे में नहीं होती, एक दूसरे के व्यक्तित्व की, एक दूसरे की साइकोलॉजी की गुणताओं को समझने के बारे में नहीं होती, एक दूसरे की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या सेंसिटिविटी है, क्या नेचर की यूनिकनेस है, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। जिसे ज्ञान लोग समझते हैं, जिसे लोग नॉलेज समझते हैं, जिसे समझते हैं हमें सब कुछ पता है, उससे वैसे पता होता है कि हमको पता है कि कार में गियर होते हैं, कार में क्लच ब्रेक एक्सीलेटर होता है, कार में स्टीयरिंग होता है। हमें पता है क्योंकि बचपन में हमने फोटो निकलवाई है गाड़ी में बैठकर। तो हमें बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि हमने समझा है कि गाड़ी चलाना या गाड़ी में स्टीयरिंग पे बैठना ही गाड़ी का ओनर बन जाना है। तो बहुत सारे लोग शादी में एक दूसरे को ओनर, एक दूसरे की ओनरशिप करने लगते हैं। और शायद यही कंसेप्ट हमारे समाज की बहुत बड़े वर्ग ने अपने अपने बच्चों को बताया कि तुम्हारी बीवी होगी, तुम्हारा हस्बैंड होगा। हमने उस सपने को इतना ओवरसोल्ड कर दिया कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें प्यार करेगा, जिंदगी भर प्यार करेगा, तुमको गोदी में झूला झुलाएगा, वो बहुत हैंडसम होगा, तुमको जिंदगी भर खुश रखेगा। क्या ये बताया गया कि वो खुश क्यों रखेगा, कब रखेगा, कब तक रखेगा? और वो खुश रखे और कब तक रखिए, क्यों रखिए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर लड़की की बात करें तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, आपको बहुत कुछ पेशेंस सीखना होगा, आपको बहुत कुछ इंटरपर्सनल स्किल्स सीखनी होगी,
आपको कैसे टैकल करना है इन लॉज को वो सीखना होगा। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। आपको वहां अपनी ईगो लेकर नहीं जाना है। आप कितना भी कमाते हो, आप कितने भी सुंदर हो, आप कितने भी एजुकेटेड हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, वहां आप अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सब्ड्यू करके जाएंगे तो आप उस घर में, उस फैमिली के साथ, उस हस्बैंड के साथ एडजस्ट कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी इंडिविजुअलिटी को लेकर जाएंगे कि मैं ये हूँ, कि मैं टॉप एक्ट्रेस हूँ, कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, कि मैं ये मॉडल हूँ, कि मैं इतना कमाते हूँ, तो आप शुरू से अपनी इंडिविजुअलिटी को इनफ्लेक्सिबल बना के ले जा रहे हैं, रिजिड बना के ले जा रहे हैं। हम किसी से हाथ भी मिलाते हैं ना, तो कभी गौर करिएगा, हाथ मिलाने के वक्त भी हमारा हाथ ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाता है दूसरे इंसान के हाथ की शेप साइज के हिसाब से, ताकि उसके हाथ को मोल्ड कर सके। कभी हाथ मिलाने के समय में देखिए, अगर अपने हाथ को आप रिजिड रखें ऐसे, तो किसी दूसरे से हाथ मिलाना चाहें तो शायद हाथ टच तो कर जाएगा मगर मिलेगा नहीं। और वो ना मिलने का और खाली टच करने का जो एक अजीब सा एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस होगा, वो इमेजिन किया जा सकता है कि हमने खाली एक दूसरे के हाथ को टच कर दिया, क्योंकि हमने तय कर रखा है कि हम हाथ को फ्लेक्सिबल नहीं करें। तो शायद नई दुनिया में काफी लोग ऐसे ही निकल कर आ रहे हैं, जिनको ये बताया नहीं गया कि शादी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, शादी मीन एडजस्टेबिलिटी, शादी मीन एक्सट्रीम लाइकेबिलिटी, शादी मीन लॉट ऑफ एडजस्टेबिलिटी, लॉट ऑफ compromising, लॉट ऑफ accommodating each other। ये सब कंसेप्ट नहीं बताए गए, पेरेंट्स ने भी नहीं बताए। पेरेंट्स ने भी सोचा कि ये सब बातें बताने की जरूरत है, वक्त के साथ सीख जाएंगे, शादी कर दो, सब अपने आप सीख जाएंगे। कितनी अजीब सी बात है। मैं कोई भी नेगेटिव सुपरलेटिव वर्ड यूज करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मुझे कभी कभी ये लाफेबल, हास्यास्पद लगता है कि हमने जिस संबंध को बनाने के लिए 20, 25, 30 साल इतने पैसे जोड़े, अपने खर्चों को काट के, अपनी जरूरतों को काट के इतने पैसे जोड़े, इतनी व्यवस्था की, इतना इंतजाम किया, इतने गैस को बुलाया, हमने उस संबंध को दीर्घायु देने के लिए, ये शुद्ध हिंदी का शब्द है, काफी लोगों को समझ में नहीं आएगा, उस संबंध को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, या हमने बच्चों को कहा कि 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे तुम किसी से मिलो जो सब्जेक्ट पर विशेषज्ञ हो, तुम किसी से डिस्कस करो, कुछ जानकारी लो एक दूसरे के बारे में, शरीर के बारे में तुमने देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है, इधर देखा, उधर देखा, इस तरह देखा, उधर देखा। मान लिया कि तुम्हें उसके बारे में जैसा तुम समझते हो कि समझो नॉलेज, कहाँ नाक है, कहाँ आंख है, कहाँ गाल है, मगर उसके आगे, और शरीर के बारे में जितनी जानकारी तुम्हें है पुरुष होने के नाते, स्त्री के शरीर के बारे में, स्त्री को पुरुष के शरीर के बारे में, वो जितनी जानकारी की जरूरत पड़ेगी उसका 10% भी नहीं है। और वो 10% जानकारी 100% सफर पूरा नहीं कर पाएगी, तुमको संतोषजनक संबंध बनाने में मदद नहीं करेगी। इसीलिए स्पेसिफिकली आज की तारीख में ज्यादा मैरिजेस टूट रही हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आज बड़ा अजीब सा मोड़ पर हम लोग आ गए हैं। आप किसी की शादी में जाएं, कोई आपको बड़े स्नेह से आमंत्रित करे, आप किसी के रिसेप्शन में जाएं, लेकिन आपके मन में ये रहता है कि पता नहीं कि ये 1-2 साल के बाद साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। और काफी जगह चांसेस होने लगे कि आपको पता चला आपकी शादी अटेंड करके आए, मगर वो तो 2 महीने के बाद अलग हो गए, वो तो 1 साल भी नहीं टिकी शादी। जितने भी मेहमान आए, जितने भी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च हुए, जितनी भी तैयारियां, सब बेकार गई। अभी हाल फिलहाल में एक जनाब तो ऐसे निकल कर आए थे जिन्होंने संडे को शादी हुई थी और थर्सडे को महिला हेलमेट थी कि मुझे डाइवोर्स लेना है। शादी को 4 दिन हुए थे, मगर थर्सडे को रो रही थी कि मैं नहीं रह सकती, मुझे डाइवोर्स लेना है। और उनके साथ में उनकी बहन, उनके जीजर भी आए थे, पढ़ी लिखी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, उनका लड़का भी जिससे शादी हुई थी वो भी पढ़ा लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट था। लेकिन कुछ चीजें, कुछ उम्मीदें, कुछ मापदंड, कुछ बातें जिसके हिसाब से डाइवोर्स लेना। तो डाइवोर्स लेना क्या इतना सरल, इतना आसान हो गया है कि कोई भी किसी के साथ दूर होने की बात सोचने लगा है? तो शादियों में जो कुछ अब हो रहा है वो बहुत ही चिंता का विषय है। हम यहाँ पर किसी भी वर्ग की और किसी भी समुदाय की और किसी भी उम्र के दौर की निंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं, मैरिज काउंसलिंग को हम ये कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस है, बिल्कुल नहीं है। हमें बिजनेस तो वैसे भी बहुत वो है, रखती है। हमें मैरिज काउंसलिंग के प्रति बहुत जबरदस्त हमदर्दी है और सहानुभूति है कि इतना महत्वपूर्ण संबंध जीवन का, और उसके बारे में हमारी अप्रोच इतनी केयरलेस है, इतनी इररेस्पॉन्सिबल है, इतनी इंसेंसिव है कि हम एक दूसरे को सिर्फ शरीर समझते हैं, 50 साल रहने का वादा करते हैं, अग्नि के सामने साक्षी होकर हम उसको
सारे वचन लेते हैं, लेकिन हम बहुत कम जानते हैं अपने अपने लाइफ पार्टनर को। मैं अपनी बात को यहाँ रोकूंगा, क्योंकि मैं जो दूसरे फेलो पैनलिस्ट हैं उनकी बात भी सुनना चाहूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जितने भी साल गुजारे हैं मैरिज काउंसलिंग के प्रोफेशन में, 5वां दशक चल रहा है, 4 दशक पूरे हो चुके हैं, और 41 साल के बाद लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, बहुत कुछ हो रहा है जिसको हमें रोका जाना चाहिए। मगर जब जब हम रिकमेंड करते हैं लोगों को कि शादी के पहले एक प्री मैरिटल वर्कशॉप हो, काफी वर्कशॉप हमने की भी हैं, फ्यू हंड्रेड प्री मैरिटल वर्कशॉप, काफी प्रोग्राम्स भी किए हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि शादी के पहले आप इतना पैसा खर्च करते हैं, इतनी शॉपिंग करने जाते हैं, दूसरे शहर में भी जाते हैं, कि आप अपने लिए 4, 5, 6 घंटे नहीं निकाल सकते। अगर आप 5-6 घंटे निकाल सकते हैं मैरिज की तैयारी में, इमोशनल तैयारी में, अगर आधे आधे घंटे के आपने 6 घंटे में 12 सेशन कर लिए किसी भी थेरेपिस्ट के साथ जो उस लाइन में ट्रेंड हो, हर कोई नहीं, कौन और कौन नहीं उसकी बात हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो शायद आप एक इंश्योरेंस कर रहे हैं अपनी मैरिज को 50 साल तक लास्ट करने का। नहीं तो गाड़ी खरीदिए, हाईवे पर आइए, एक्सीडेंट करिए, तो दूसरी गाड़ी खरीदने जाइए। बैक टू मिस्टर लाल। Thank you very much, Dr. Rajiv Anand. And Dr. Rajiv Anand explained in a very, very easy way about the benefits of marriage counseling. And he has given the examples of car. Now, this aspect of marriage, which is not taken seriously, and as Dr. Rajiv Anand very rightly said, when you are spending so much money, lakhs and crores of rupees for decoration, for band baja barat, why you are not spending some time for good marriage counseling with a proper trained, the person who has already taken the training, the marriage counseling. So according to Dr. Rajiv Anand, the marriage counseling is must, because you might have become physically developed for the marriage, but whether mentally you are also of that developed, and you have you're reasonably equal to the other partner or not, what are the shortcomings, or something which are having more qualities the other partner. All these things marriage counselor can explain and tell what is to be done and what is not to be done. But he says, unfortunately, in India, still, in spite of his practice of 41 years, the trend is not that encouraging, and the trend of divorce is taking place like anything. According to Dr. Rajiv Anand, marriages are breaking very, very fast because they are not mentally comparable, and that's why they are getting in this problem. So according to Dr. Rajiv Anand, one must go and spend some few hours with a trained, experienced marriage counselor, not with the quacks, so that they can counsel, give you the mental stability, and then only your marriage can last for many, many years. Otherwise, the trend which is started is very, very serious, which we should not see. Thank you very much, Dr. Rajiv Anand. I'm sure that our viewers who are watching our show today definitely got the examples which you have given about the car. And so this example clearly shows that if you are not trained mentally also, your marriage will not succeed. And this we are seeing everywhere nowadays. Even in a small villages, in small towns, it's happening. Earlier, it was a trend only in metros and big cities, but now it has reached to the, and this is a very, very alarming thing. Thank you very much, Dr. Rajiv Anand. When we'll come to the next round, definitely I will be asking questions to you so that we will get more clarification of why it is required. You are saying it because you are a marriage counselor, or you are generally saying because you want that to safeguard the lives, happy lives, married life of the youngsters. Thank you very much, Dr. Rajiv Anand. Now I would like to invite my next panelist guest, and she is Miss Rashi Lashkari. Miss Rashi is a renowned counseling psychologist and family therapist. She is practicing in the field of mental health care for last 12 years. She has gained extensive experience of working with children and adolescents after having worked as a school psychologist for 5 years with different leading schools. She is currently practicing as an individual and family therapist.
She is also trained in the area of relationship and marriage counseling. Her expertise lies in dealing with clients of all age groups using an eclectic approach in psychological counseling and therapy. Ms. Rashi has been acknowledged as one of the India's top 10 counseling psychologists. She currently works out of her clinic in Andheri West, Mumbai, and provides online therapy to numerous clients across the globe. Welcome, Ms. Rashi Lashkari, on our show. Ms. Rashi, you have heard what Dr. Rajiv Anand has said. Although initially he mentioned very clearly there is a generation gap between you and him, but his views are a bit alarming for the society, because the trend which is seen everywhere especially in India, which was a very conservative society, we were to hear the name of divorce in a city was like something very, very taboo or very unique. But today, every alternate house is having this problem. And according to Dr. Rajiv Anand, what he said is, this is because mentally they are not prepared. The boy and girls are not prepared. Now you are having so much experience and you are among the top 10 league of the among top 10 counseling psychologists. Definitely you would like to know your views on this very, 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 very important topic, and that is benefits of marriage counseling. Ms. Rashi Lashkari, please. Thank you. Thank you, Mr. Lal Goel, for the introduction, and thank you for inviting me for your successful series of such programs. It is always a pleasure to come here to speak to a larger audience, and especially when it is on a topic like this. So to be able to be on the same panel with your experience, with experience as rich as that of Dr. Rajiv Anand, it gives me immense joy to have this opportunity to be here. The topic that you have picked up very specifically is one that people have a lot of misconceptions. There are a lot of doubts. There's very little information. Jitna bhi hum bolein ki today it's become more acknowledged. Today people are more familiar with the concept of divorce. Yet when it comes to marriage counseling, there are a lot of doubts in people's minds. And if I talk about myself also, when I started my career as a counseling psychologist 11 years ago, now in my 12th year, it was only over time I felt the need to keep upskilling myself with different courses and different academic training, which was very specifically in the subject of relationship or marriage and family therapy. Now, when you ask, Ki, what are the benefits of marriage counseling? I just want to take a little moment to explain how we perceive it as professionals, right? That just when you were sharing about the history of marriage counseling, that was very, very good information that you shared with the audiences. You shared somewhere that it was commonly understood and accepted that people go for individual work, right? For individual mental health or psychological concerns. But just like we reach out for any kind of mental health support or counseling and therapy for our individual needs, now often couples reach out, or they reach a point rather in their marriage when there are recurrent conflicts or interpersonal problems. Now, most partners obviously do make an attempt, understandably so, to try to solve the issues themselves. But as professionals, we don't see marriage counseling as only a problem solving process. That is the part that I completely relate to and would resonate with Dr. Rajiv Anand. This process is more about learning the right interpersonal skills. So it is not only about that one fight that you need to go to a third party who is a professional who can help you to solve it. It is not only about solving one fight and how that should get resolved. It is more about learning the right methods to, let's say, resolve issues in general. It is more about learning the right skills to be able to sustain and maintain the marriage in the long term in a happier state of emotion. So no community, like both of you were talking earlier, no community or no culture really today is finding it important. Even as a society, we don't find it important to guide our young adults, right, in understanding the complex dynamics of either a romantic relationship or a close bond like marriage. So from communication issues to life decisions that have to be made together, to managing conflict and even intimacy related problems.
Most of these areas are not spoken about or are brushed under the carpet, assumed or believed in the dark that the young adults or the young couple will be able to figure it out on their own. And these are the very issues that couples come into therapy with. These are the very issues that are addressed in the scope of marriage counseling, these and beyond. When a couple approaches a therapist, first we spend enough time to understand each partner's concerns and their individual personality patterns, and then design what we call like a unique plan or a counseling plan for them as a couple. In most cases, this also includes individual work. So since each partner may be needing to resolve some of their own personal issues or may want to improvise on very specific skills that will make the marriage work successfully, marriage counseling is usually a very effective combination of individual counseling and couple counseling. So it's a combination of you working individually with the therapist as well as together with the therapist to make this work. So today, of course, as we're all aware that we are living in a world which is so strongly influenced by social media, and there's a lot of pressure that adds onto people's life in general, right? There's a pressure to project happiness. So we see couples posting extremely loving, happy, almost perfect looking pictures on social media platforms, but the reality often is far from that. Reality really is that many marriages go through rough patches, and we have to learn to cope better with that. We have to learn better to cope through that instead of remaining in denial, instead of feeling that a social representation of a happy marriage is enough, and accepting that har shadi aisi hi hoti hai, there is nothing uncommon, this is the story of every household. Instead of remaining in denial and accepting that as your reality, you have to understand the significance and the benefits of investing or committing to a process like marriage counseling that can turn around the situation for you. So, marriage counseling, in fact, has been proven to be very successful in making couples feel secure and thus overall improving the quality of their lives in general, not just personally, interpersonally, but also professionally. So when your personal life and your marital life is going to have a stronger balance, that will obviously reflect itself in the lives that you lead outside of your home. So that, according to me, is just a brief introduction of marriage counseling. I would be happy to take on any questions that you have further from there. Thank you very much, Dr. Rashi Lashkari, for giving your views. And Dr. Rashi says that it is not only when there is a fight, but it is one has to be prepared before marriage about the how to be with the spouse lifelong. And she is also mentioned about the social media, which is now is very common. She says that the social media, what we are seeing on their profile and status, is only to show outside, but whether it's real or not. So all these things, the pressure is there, but it is always better to have the counseling from a third person who can guide properly if they are trained and if they are expert in this field. Thank you very much, Dr. Rashi Lashkari. Definitely, I am going to ask the straight questions, and I expect straight answers from both of you. Now, my first question goes to Dr. Anand. Dr. Anand, right now we are talking in this age about the marriage counselors. But in like me and you, we never have this marriage counselor at that time. The marriage counseling was done by our family members, the elders. But now the marriage counselors are there. So do you think that now why first thing, my first question is, why this trend? Number one. Number two, if the marriage counselors or the earlier what advice the family were giving to in the scale of 1 to 10, but now marriage counselors, those who are experts, are giving proper advice. What do you say about this, Dr. Rajivan? Yeah, Mr. Lal, very interesting perspective on this. In fact, I'm more a traditional person, more rooted in the old value system. And I admire, I put on record, we had great parents and great grandparents in great society. But we would also agree that our parents or grandparents or uncles or auntie did not make us sit across the table and gave us any lesson about the basics of the marriage. No, that formal
thing was not needed, but much more than that, and more significantly than formalization. They played that role. They acted as role model. We never heard our parents shout of the home or the usage of the word of divorce or separation. We never heard. That concept was never in our mind. Their parents could be separate. Which today we see so many kids pathetically. We feel so pathetic about them that their parents are living separately. Or the court has given custody to the court has given to meet once in a month or once in a week or so. Now, role modeling of elders in the society, responsible people in the society, was the greatest teacher in that era from which we have come. And marriage was not merely union of two individuals at that time. Marriage was union of two families, two खानदान देखे जाते थे. कई बार तो लड़की को भी देखे बिना या उतना महत्व दिए बिना खानदान को देखकर एक दूसरे की शादी पक्की करती जाती थी, और वो शादियां 50 साल चलती भी थी. क्योंकि दूसरा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है, society in general cemented marriage or relationship. The legal systems kept it from breaking apart. The religion played a very important role कि आप किस्मत वाले हैं, पिछले जन्म के संस्कार होंगे कि आप एक दूसरे से मिले हैं, आप एक दूसरे के अर्धांगिनी हैं, अर्धांग जो भी कहा जाए, एक दूसरे के जीवन साथी हैं, ये आपका सौभाग्य है, आप अगले कई जन्म तक एक दूसरे के ही जीवन साथी रहेंगे. Religion also played its own role. We also have mythology, Radha Krishna या कृष्ण रुक्मणी या सीताराम जी या शिव पार्वती. We had the role model. How many mythologically we've heard about divorce? Where in which scripture, which mythology we've heard about multiple marriages? Leave aside even Krishna Bhagwan ji and his फ्रेंड्स, जितने भी लोग कहे जाते हैं, वो एक अलग डायमेंशन है. लेकिन उनकी पत्नी का नाम अलग था, शायद रुक्मणी था अगर मुझे सही याद हो. तो वहां भी कभी उस तरह की बातें नहीं होती थी जो अब आ रही हैं. और अब क्यों हो रही हैं और क्यों मैरिज काउंसलर का रोल है? क्योंकि कुछ लोग जो शंका रखने वाले होते हैं, जिनको इंग्लिश में सिनिकल कहते हैं, या कुछ लोग जो बहुत जल्दी जजमेंट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में कीड़ा होता है कि डॉक्टर लोग कॉमर्शियल होते हैं, ये डॉक्टर लोग बिना वजह लोगों की जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं. एक चीज क्लियर करना जरूरी है कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन सदियों से या पूरे इतिहास में इतनी थ्रेट में, इतने खतरे में कभी नहीं था जो अब है. जो 5 मिनट पहले राशि लश्करी ने बोला कि आज सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, आपके मोबाइल में कितने लोगों के मैसेज आते हैं, कितने लोग आपको हाय बोलते हैं, कितने लोग आपको बाय बोलते हैं, और कितने लोग बीच में कुछ एमोकॉन यूज करते हैं. कौन सा एमोकॉन यूज करते हैं वो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है. उसमें एमोकॉन में हग वाला भी होता है, किस वाला भी होता है, हाथ जोड़ने वाला भी होता है, ताली बजाने वाला भी होता है. वो उनके उस समय के सेंटिमेंट पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना नजदीक महसूस करते हैं. जरूरी नहीं है कि आप भी उनके लिए उतनी ही फीलिंग रखते हो, लेकिन चूंकि अगर आपके मोबाइल फोन में है तो आप शक के दायरे में आ जाते हैं कि आप उनके साथ कुछ आपका चल रहा है. कितनी सारी मैरिजेस आजकल टूटती हैं सिर्फ मोबाइल के चेकिंग की वजह से. कितने सारे लोगों को झूठे प्रदर्शन करने पड़ते हैं जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के प्रति, जो दिल से नहीं रखते. तो बिसाइड मच ग्रेटर डेंजरस रोल ऑफ सोशल मीडिया, दूसरी बातें जो हो रही हैं कि हस्बैंड को काम पर निकल जाना है सुबह 8 बजे, रात को 9 बजे आना है, वाइफ को निकल जाना है, रात को आना है. दिन भर ट्रैवल करके ऑफिस का काम करके वो थके मांदे होते हैं. उनके पास उतना समय, उतनी एनर्जी, उतने इमोशंस, उतने एफर्ट्स नहीं बचे कि मैरिज को सीमेंट करें. न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली नहीं है, घर भी संभालना है, ऑफिस भी जाना है, फाइनेंशियल नीड को पूरा करना है. तो मैरिज अपने आप में टू मच स्ट्रेस, टू मच स्ट्रेन से गुजर रही है, और ये ग्लोबल फेनोमेना है. तो जो बाइंडिंग फोर्सेस थे लार्जर फैमिली के, रिलेटिव्स के, पेरेंट्स के, नेबर्स के, रिलीजन के, लॉ के, वो सब धीरे धीरे डिसबैंड हो रहे हैं. और जो ब्रेकिंग फोर्सेस थे सोशल मीडिया के, वर्क लाइफ के, एक्सेसिव डिमांड एट द वर्क प्लेस, excessive demand on your energy, time, emotions in your job because they are paying you a high salary. They expect you to work overtime.
दे एक्सपेक्ट टू स्ट्रेच योर टाइम बियॉन्ड 5 or 6 o'clock to 10 o'clock। घर पर वाइफ क्रिप कर रही है कि आपको मेरी फिक्र नहीं है, आप घर आते ही नहीं है, आप घर लेट आते हैं, आप खाना खा के आते हैं, आप जब तक आते हैं जब तक मैं सो जाती हूँ। ये कहानी घर घर की हो गई है। तो मैरिज आज की डेट में सबसे डिफिकल्ट चैलेंजिंग टाइम से गुजर रही है, और वहां पर उन दंपतियों को नहीं पता कि कैसे इसको संभाला जाए, रोका जाए। क्योंकि शुरू के टाइम में उन्होंने छुट्टी ली, शादी के टाइम पर हनीमून पर गए, आई लव यू के गाने गाए, आई लव यू सुबह से शाम तक 20 बार बोला, एक दूसरे के साथ कश्मीर गए। तो शुरू में वो जो रोजी पिक्चर थी, ड्रीमी पिक्चर थी, वो बरकरार रही शुरू में। उसके बाद एकदम से रोलर कोस्टर राइड की तरह एकदम से नीचे आ गए। वाइफ लोगों को लगता है कि ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। उन बेचारों को नहीं पता कि मैन की लाइफ में काम भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम पर एम्प्लॉय को भी सेटिस्फैक्शन देना वो भी जरूरी है। उनका कंक्लूजन वाइफ का निकलता है कि ही हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी और प्रॉब्ली ही हैज फाउंड इंटरेस्ट समवेयर एल्स। और वो किसी से बातें भी डिस्कस नहीं करती,